अच्छा जी, if you recall, we discussed what engineering was, then we went to describe mechanical engineering, and then we also talked about mechanical engineering design, in which we already talked in some depth that design is the process, or design is to formulate a plan for the solution of a certain problem. ठीक है जी? एंड हमारे पास डिज़ाइन जो है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिज़ाइन जो है, दिस इज़ एन इनोवेटिव प्रोसेस। इसमें आप किसी प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन ढूंढते हैं which um, which exist and it has not yet been solved, yeah, or you modify an existing system to get some required need fulfilled. ठीक है जी? तो इस प्रोसेस में there is innovation, and again there is iteration. You would have different trials in there. You go ahead and you know tweak things and look at the outcome. And again, when you start a design, there is a lot of decision making involved. So for a good for a good mechanical engineer, or for a good designer, it is very necessary that he has this ability of making decisions. Otherwise, without decisions, you are not going to go anywhere. So you cannot solve a problem. ठीक है जी? So again, when you are designing, yes, this is a communication intensive um, process, and you have to deal with many people probably. um, well, you can design by your own, but generally the problem or the need would come from someone else. It might be you who come up with the need, but when there is a need, people will approach you as you are the problem solver, the engineer, and as we discussed, you are the one um, who is professionally equipped to resolve the problems of the society and work for the benefit of the society using the available resources. So again, this is communication intensive. You might have to deal with many people. For example, मैं अगर हम list करना चाहें, तो you might be working with just general public. ठीक है जी? um, you might be dealing with the government. ठीक है जी? um, you might be in communication with other engineers. ठीक है जी? For example, civil, ठीक है जी? Electrical, or from some other field like agricultural and so on. ठीक है जी? You might be talking to lawyers. So what I mean is that you might be talking to your co-workers, I would say. तो co-workers में आपके अपने engineers, आपके अपने colleagues, you might be sharing information with them, um, and, and it depends. A design, जैसे मैंने कहा कि it might involve the general public. आप किसी के लिए कर रहे हैं तो you have to get input from them. ठीक है जी? And then if you make any progress, you would let them know कि आपने क्या किया है. So if there is any progress, you would
want to express that progress to them or communicate that progress to them. तो ये जो चीज़ें हैं, again this needs a lot of you know communication between yourself and जो बाकी लोग हैं, and not limited to these के जिनके साथ आप कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है जी। हम अगर देखें, इफ यू रिकॉल, तो हमने क्या किया था कि वी ऑलरेडी, एक सेकेंड, लेट मी मेक दिस माउस अ लिटिल बिट मोर विजिबल, हाँ, so that we can see it. अच्छा, is the mouse better now? No, the same, ठीक है जी। अच्छा, तो what we were saying is कि if we are designing, then there are different things that we look in a design, but the foremost thing is क्या? The functionality. Functionality means that the design should, functionality का मतलब क्या है? Can someone tell what desired outcomes है provide करे, desired outcome provide करे, मतलब इसका जो काम है वो हमें करके दिखाए। सो इट शुड फंक्शन एटलीस्ट। जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं वो इसीलिए बनाते हैं ना कि वो फंक्शन करे। तो वी वुड नीड दिस प्रोडक्ट टू फंक्शन फर्स्ट, ठीक है जी। देन द नेक्स्ट थिंग इज कि हम इसी प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे? वी वुड वांट इट टू बी क्या? वी वुड वांट इट टू बी सेफ, ठीक है जी। क्योंकि even if it functions, but if it is not safe, then probably you won't get that, you won't buy that, or you won't use that if it is a threat to you or to someone else or to any property that you have. So these are the foremost things that we are going to look for in a product when you design it, ठीक है जी। Then there are other things that we are going to be looking at, और वो चीज़ें जो हैं those are design considerations, ठीक है जी। वो डिज़ाइन कंसिडरेशंस, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे रिलायबिलिटी है, competitiveness है, यूजेबिलिटी है, मैन्युफैक्चरेबिलिटी, and it should be marketable and so on, ठीक है। So these are the things that you are going to be looking at when you are designing something, ठीक है जी। फर्दर अगर हम देखें तो जैसे जैसे हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिज़ाइन करते हैं तो इट विल बी इन डिफरेंट फील्ड्स, ठीक है जी। और आपको जो है उन डिफरेंट फील्ड्स की के लिए जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, you study different subjects. For example, उनके लिए आप fluid mechanics, heat transfer, you study materials, thermodynamics, and so on. It is because
we are involved in many disciplines of mechanical engineering, or and for that reason we would need to study all these subjects to go into design in all these different fields. ठीक है जी? तो अगर आपको याद हो तो this is what we said in our classes, that we would need the knowledge of different subjects. ठीक है जी? और इसमें आपको एक तो you need to keep yourself updated. ठीक है जी? और दूसरी बात ये है कि you would need knowledge, the basic knowledge of mechanical engineering, at least to design something when ठीक है जी, to design something in that field. जी, any question? No, sir. अच्छा, so then if you remember, we went through the different phases of design. ठीक है जी? और क्योंकि we say that the design process is, what is the design process? It is a thought process. It is a systematic process. ठीक है जी? तो चूंकि this is a systematic process, therefore in this systematic process we need to proceed through a certain way. ठीक है जी? and that procedure, अगर आप देखें तो that procedure is listed over here, और इसको हम कहते हैं phases of design. ठीक है जी? ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, this is what we call phases of design. तो ये phases of design हमने discuss किए, and again as you all would probably recall, we said that we first identify the need. ठीक है जी? And once we identify the need, once we know what the problem is, we go ahead and define the problem. और define में हम क्या करते हैं कि we go a little bit deeper into it, defining the input, the output. Then we look at the different ways that we can solve or we can resolve the problem in. और उसमें से we go ahead and select one or a few, and we go to the next phase, which is analysis and optimization. Analysis and optimization में हम finally drawings वगैरह सब details यहाँ पे I would say कि ये जो यहाँ पे phase है, ये वाला phase, इसमें आप तकरीबन सब कुछ कर चुके होते हैं, right? And then what we do is we do evaluation. evaluation में हम क्या करते हैं कि evaluation में हम जो है देखते हैं कि जो हम कह रहे थे, is it working that way or is it not working that way? ठीक है जी? तो basically you would go and test whatever you have done in all these steps. क्योंकि in steps में what did we do is that we straight went from defining, first of all, identification of the need. ठीक है जी? और फिर identification of need से we are going down to designing the whole thing, all the details. ठीक है जी? और फिर उसको optimize करके then we are going to test this. ठीक है जी? तो अब हमारे पास ये डिज़ाइन आ गया, तो we are going to test this, we are going to evaluate this. और जब ये सब चीज़ें हो जाएं तो we will present it. But आपको एक और बात बताते जाएं कि it is not, excuse me just for a second, let me tell you कि it is not
नेसेसरी कि आपका जो डिज़ाइन प्रोसेस है वो इसी तरह से smoothly you go from identification to of need to definition of the problem, and then from that to synthesis. Maybe if there is something wrong, if there is something that you think that you need to go back and look at the process or look at the phase that you came you know came to the next phase, you might have to go back. ठीक है जी. फॉर एग्जांपल एवेल्यूएशन में आप रियलाइज करते हैं कि आपने एनालिसिस और ऑप्टिमाइजेशन में वापस जाके you need to either look at things, modify them or look back at them. तो ये एरोज जो है ये वापस हर एक फेज में, किसी भी फेज से आप किसी भी फेज में जा सकते हैं वापस. ठीक है जी. बिकॉज इट इज नॉट मतलब इट इज नॉट नेसेसरली, जो अभी मैंने आपको कहा कि ऐसा भी नहीं है कि आप सीधे बस जाते जाएं और कोई मसला इसमें ना हो. तो इट इज यहाँ पे अगर आप देखें तो वी से दैट इट इज एन इटरेटिव प्रोसेस. ठीक है जी. और यहाँ पे ये जो इटरेशंस हैं ये आप करते जाते हैं. previously phases आप modify करके you go you go back. जब आप ये करेक्ट करते हैं, प्रॉब्लम अगेन डिफाइन करते हैं, फिर सिंथेसिस, एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन, एवेल्यूएशन. तो यू कैन गो ऑलवेज गो बैक टू ऑल दीज जो हमारे पास इसमें स्टेप्स हैं, जैसे ये और ये लाइंस जो है they always take you back. ठीक है जी. तो they take you back and you correct whatever or you modify and then come back down to the solution. ठीक है जी. एक दफा आपके पास solution आ जाए तो what do? You go ahead and present that. ठीक है जी. तो वो presentation जो है ये this is again very necessary. जैसे अभी हम कह रहे थे, अगर आपको प्रेजेंटेशन नहीं आती, because what does presentation do? That it would take all this. ठीक है जी. और ये सब चीजें जो है आप प्रेजेंट करते हैं, तो अगर आपको प्रेजेंटेशन नहीं आती तो you do not have these. ठीक है जी. आपको ये नजर ही नहीं आ रही ये चीजें. अगर आपकी प्रेजेंटेशन नहीं है तो nobody is going to understand or nobody is going to know कि आपने क्या किया है. ठीक है जी. तो therefore आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स जो है ना ये वाले, they need to be very sharp. जिस तरह डिसीजन मेकिंग इसमें ज़रूरी है, इसी तरह प्रेजेंटेशन स्किल्स इसमें ज़रूरी हैं. एंड as far as we are concerned as an institution, तो आपको ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि you have a good you know जैसे communication skills, since we do that in English, तो आप लोगों को इंग्लिश कंपोजिशन भी हम पढ़ाते हैं, आपको टेक्निकल राइटिंग भी पढ़ाते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स भी पढ़ाते हैं. And this presentation is not limited to just either oral, it might be written, you might be presenting a report. ठीक है जी. रिपोर्ट हम लिखते हैं, हम ओरल प्रेजेंटेशन करते हैं, आपको शायद रिसर्च पेपर लिखना पड़े, कॉन्फ्रेंस में आपको प्रेजेंटेशन करनी पड़े, या किसी और जगह पे वर्कशॉप में आपको कोई काम करना पड़े. So these are all forms of presentations that you probably would be performing या telling about all these steps. अच्छा, इसमें कुछ चीजें जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जैसे let's see, any question? कोई question है? No, sir. Okay. Okay, sir. No, sir. Am I going right? Is the speed fine? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, good. Yes, sir. Sir, सही है. ठीक है. तो
Now, going to the next slide, I would say कि अभी हम बात कर रहे थे कि दो चीज़ें दे आर वेरी नेसेसरी, मतलब दो नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले जो काम है या सबसे पहले जो चीज़ है वो हम क्या करते हैं कि ये जो फंक्शनैलिटी है ना इसको हम देखते हैं. We want to make sure that जो डिज़ाइन हमने किया है it should perform its function. ठीक है जी, या ये क्या काम करेगा, we would, you know, we would take that into account. So these are the characteristics that would influence the design. जब आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो आप इन फैक्टर्स को देखते हैं कि ये what is the functionality of it, या क्या काम करता है. Then again I would rather skip this 2 3 4 and go to 6 straight. कि safety is something that is really important. ठीक है जी, तो I would say this should go on number 2. But when you look at the safety, you probably would look at the stresses and strengths. जब भी कोई component, कोई machine या कोई भी चीज़ आप डिज़ाइन करते हैं, तो what do you do is that you do analysis, you look at the forces. Again, since it's a mechanical engineering, so you look at the forces, you look at energy conversion, you would look at motion, ठीक है जी, equilibrium and all these things. तो जो भी stresses or strengths हैं, you look at those. So this is something that you need to put in your analysis. Distortion, deflection, stiffness, wear, corrosion, reliability, again manufacturability, utility. ठीक है जी, ये सब चीजें जो है they you are going to look at these: weight, life, noise, styling. ये चीज भी बड़ी important है ना. You go to the market and you know, buy things that look good. तो aesthetics जो है, that is one of the major things. The styling, shape, size, weight, I would say. ठीक है जी, weight हमने already यहाँ पे list किया हुआ है. तो you look at all these things when you are designing. ठीक है जी. Again, देखिए, if you are designing something but you cannot market it, it's of no use. ठीक है जी. If you design something and you cannot manufacture it, it is of no use. ठीक है जी. तो ऐसी चीजें, या technologically it is not, you know, you cannot make it, you don't have the skills or the workforce or the material, so that design would be considered as not as the solution to the problem. ठीक है, because you will not be able to act upon it. और अगर आपको याद हो तो this is what we said कि हमारे पास जब भी कोई डिज़ाइन हम करते हैं, स्पेशली फॉर एज एन इंजीनियर, तो व्हाट डू वी डू एज इंजीनियर, हम क्या करते हैं, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंजीनियर, कोई बता सकता है? लगू है एनीवन? व्हाट डज एन इंजीनियर डू? प्रॉब्लम्स जी, प्रॉब्लम सॉल्व करता है. एंड हाउ? What is the difference between a scientist, pure scientist, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वगैरह, और इंजीनियर में क्या फर्क है? साइंटिस्ट उस चीज पे काम करता है जो नजर आ रही होती है, एग्जिस्टिंग फिनोमेना होता है, वो उस पर रिसर्च करता है. वो इंजीनियर उस चीज पे काम करता है जिसकी नीड होती है, जो पहले कभी किया भी नहीं गया होता.
तो इफ यू मीन दिस कि जब हमारे पास मतलब इंजीनियर होगा, व्हाट वुड ही डू, कि वो क्या करेगा कि लेट्स से देयर इज ऑलवेज, जब हम बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट सिस्टम्स, ठीक है जी। तो व्हाट वी वुड हैव इज, अगर हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है जी, और लेट्स से ये एक सिस्टम है, ठीक है जी, और इसी सिस्टम में हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ यू नो एक एक तो ये है कि देयर इज सम इनपुट टू दिस सिस्टम, ठीक है जी, और फिर देयर इज सम आउटपुट फ्रॉम दिस सिस्टम, ठीक है जी। तो और फिर यहाँ पे ये सिस्टम जब काम करता है तो ये किस तरीके से काम करता है, दीज आर द प्रिंसिपल्स, दिस वर्क्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स लॉज ऑफ साइंस, ठीक है जी। तो साइंटिस्ट क्या करता है कि वो ये जो ऑलरेडी सिस्टम एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी, द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम से वो जो है I would say input, ठीक है, and then output, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, क्या कहा, साइंस। देखें जैसे थ्योरीज है, ठीक है जी, लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, सो व्हाट डज अ साइंटिस्ट डू इज दैट साइंटिस्ट वुड फाइंड दीज, ठीक है जी। साइंटिस्ट ये मालूम करेगा, ये साइंस का काम है, ठीक है जी, कि एक इनपुट है, सिस्टम चल रहा है, एंड देयर इज सम आउटपुट, एंड ही फाइंड्स आउट व्हाट इज, हाउ डज इट वर्क, ठीक है जी। लेकिन जहां तक इंजीनियर का ताल्लुक है, तो व्हाट डज एन इंजीनियर डू इज, इंजीनियर जो है वो क्या करता है, वो इस सिस्टम को डेवलप करता है, वो एक सिस्टम, नए सिस्टम को डेवलप करता है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे इन्होंने कहा ये कि एक सिस्टम को डेवलप करता है। तो दिस इज व्हाट एन इंजीनियर वुड डू, उसको ये चीजें पता होती हैं। And for an engineer, what do we have, कि you tell him that I want this kind of output, ठीक है जी। तो ये आउटपुट है, एंड व्हाट आर these are, ये जो इनपुट है, these are the resources, ठीक है जी। और सब चीजें जो 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 आपके पास मौजूद है, जिनको आप इस्तेमाल करेंगे, those are the inputs that you feed into the system, ठीक है जी। और आपको जो आउटपुट चाहिए, you state that an engineer would develop this using the scientific theories, laws and principles, ठीक है जी। So I hope you got the difference between a scientist and an engineer, है ना? Yes, sir. अच्छा, now the thing is कि जब हम when we design, so we use a lot of computational tools, जैसे आप लोगों ने कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, ठीक है जी, computer aided engineering, see any computer software to aid the engineering process, जैसे फॉर एग्जांपल हम इस्तेमाल करते हैं जनाब, कौन कौन सी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, कैड कैम, ठीक है जी,
CAD, which is computer aided design. We can do drafting with it, 3D modeling हम कर सकते हैं, so या drawing कर सकते हैं. We also use computer aided manufacturing, which is CAM. तो CNC अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो टूल पाथ उसके लिए G codes generate करके या rapid prototyping करके we can take advantage of computer aided manufacturing, and we will manufacture with the help of a computer that makes it easy for us. इसी तरह we can also do analysis and simulation. ठीक है जी, analysis और simulation में हम जैसे finite element analysis कर सकते हैं, CFD कर सकते हैं, and things like that. ठीक है जी. So there are modules for them. There are different toolboxes. You can develop your own toolboxes. You can you can do your own coding and you can develop your own programs. ठीक है जी. Your own algorithms that would perform analysis and simulations for you. Generally, simulation, what is the difference between, मतलब जब हम simulation, अभी वहाँ पे एक चीज़ आई थी जिसको हम presentation से पहले evaluation. तो how do we do evaluation of a product? या तो हम prototype बनाते हैं या फिर हम फुल स्केल मॉडल बनाते हैं, उससे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, या अगर ये पॉसिबल ना हो कि वी मेक फिजिकल मॉडल्स of these things, what do we do is that we would go for simulation. मॉडल करके उसकी मॉडल बना, उसका मॉडल कंप्यूटर मॉडल बना के we carry experiments using a computer, which is in a way they are just, they are not physical experiments, because physical experiments kabhi they are very expensive, they take a lot of time, they are probably not possible, maybe hazardous, maybe they will take a lot of time, तो हम simulations करते हैं. So that is what simulation is. Any question? Yes sir. जी. हमें कैसे पता चलेगा कि सर सिमुलेशन का रिजल्ट रियल वर्ल्ड रिजल्ट की तरह होगा या नहीं होगा? वेरी गुड. देखें, जब हम मॉडलिंग करते हैं, ठीक है जी, तो सिमुलेशन से पहले हम मॉडल बनाते हैं, ठीक है जी, तो और फिर हम सिमुलेशन करते हैं, मतलब वी कैरी ऑन दोज एक्सपेरिमेंट्स. तो जैसे अभी मैंने कहा कि मॉडल के बहुत सारे किस्में हैं, जैसे प्रोटोटाइप भी मॉडल है, ठीक है जी, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन जब आप करते हैं तो दैट इज आल्सो अ मॉडल, बट दैट इज अ मैथमेटिकल मॉडल. और जनरली जो कंप्यूटर मॉडल हम बनाते हैं वो होता असल में मैथमेटिकल मॉडल ही है. जैसे अभी आपने कहा कि हाउ डू वी नो कि हम जो सिमुलेशन कर रहे हैं that is giving us results that will be the same as a physical model will give us. Yes, there are implications. जब आप फिजिकल मॉडल बनाते हैं या फिजिकली जो चीज़ बनाते हैं उसके अपने मतलब अपनी चीज़ें